Smriti ma'am, do you want to start the session now? Yes, sir. Good evening, everyone. Okay, so we have two speakers over here, and they are here. As you know, the webinar is about your entrepreneurship, and it is being conducted so as to make you all understand the needs about it and what current scenario it is holding in the society. So the speakers, those who are here, I'll just give a brief introduction about them. Ayush Shukla, Engineer Ayush Shukla is here. He's a young professional in the fields of entrepreneurship and governance. And by qualification, he's an electronics engineer, and he's holding an experience of working with various stakeholders in the startup ecosystem. So as you all know that we have been discussing about startups from quite a while, since this Innovation Institute Innovation Council has been established in the college itself. So startups are going to be something that will be benefiting all the students of final year, right? And so forth coming third year and second year. Engineer Ayush Shukla has also worked with the Research Innovation Incubation Design Labs, and which is a startup incubator housed at Somaiya Vidya Vihar University, Maharashtra State Innovation Society, and in the government of under the government of Maharashtra. He's currently working at Village Capital, managing their portfolios of South Asia and Southeast Asian companies. Our other speaker, Ms. Hetal Mundra, I think she's also joined us. She's here. Yes, she's here. Welcome, ma'am. She's a community architect at RIIDL and the founder of the Somaiya School of Design. She has been an engineering faculty at KJ Somaiya College of Engineering for 13 years. In 2018, she joined RIIDL and has been leading the design thinking programs at the incubator. So I welcome you both, and so that because you all spared time to come here and join us on this platform, and I know it has been very difficult for you all to spare some time for this event because you people have a lot of activities planned on your schedule, and thank you so much for coming. And I'm really glad my students will be able to learn a lot from you. Thank you, Smriti. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Over to you both. Yeah, thank you. हाँ, सभी को शुभ मध्यांतर. थैंक यू शुभम, बहुत ही अच्छे ग्रीटिंग के लिए. तो कंसिडरिंग अभी जैसे हमने प्लान किया था कि काफी सारे लोग रहेंगे, बट अभी तक उतने टर्न अप हुए नहीं है. सो इट्स गुड इनफैक्ट इन अ वे, बिकॉज हम थोड़ा और फोकस सेशन कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू हैव मोर इंटरेक्शन, राइट? इफ पॉसिबल, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी इफ यू कैन अनम्यूट योर वीडियोस. चेहरे दिखते तो अच्छा लगता है, अपने आप से बात करने में उतना मजा नहीं आता है. अच्छा, कोई चला गया? Possibility, I think everyone should turn on their videos and we should say hi to them. Yeah. So if you all can just turn on your videos for a few minutes in the beginning at least, so we can say hi to you, so we know who the audience is, and then Ayush can take over. Hi Shubham, thank you so much. We're waiting. We really will wait till everyone turns on their videos. Yes. Hi Ritika. Hello ma'am. Hello sir. Hi. Hello ma'am. Hello sir. Hi Arbaz. Hi Mohammed. शुभम आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो. एग्जैक्टली अगर पॉसिबल है तो हम मतलब मुंह दिखाई नहीं करनी थी. Yeah. It's a very intimate crowd. If we can at least turn on our videos for a few minutes in the beginning for us to understand who you all are, and फिर चाहे तो हम जब present कर रहे हैं, you all can turn on. वीडियो रिक्वेस्ट पे लोग ड्रॉप ऑफ ही करते जा रहे हैं, बट ठीक है. Yes. All right. I think Ayush, you could start. Yeah. So first of all, welcome to this lecture. And again, as I mentioned, right, we were planning to keep this interactive, right? So मतलब बात भी करते रहना, engage with us, because otherwise ये चीज हम 15 मिनट में खत्म करके निकल सकते हैं, ठीक है? और उसका पॉइंट नहीं होगा in case you
guys do not want to spend more time on this. ठीक है. So initially as I mentioned first, मतलब at least I would like to know कि हमारे साथ कौन कौन है यहाँ पे now, because we have a small number of people. So if if you could just go around and maybe talk about what you're expecting from this session, right? Are there any expectations that you're coming with, or do you have something in mind? I'd be very keen to know about that, and we can steer the discussion in that particular direction. अगर नहीं करना है तो फिर हम रिकॉर्डिंग ही भेज सकते हैं of the whole session of us talking, but it works either way. So Ritika, do you want to go first? 6 लोग हैं, हम नाम तो ले ही सकते हैं हम. सर हमें कुछ ना कुछ मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ ना कुछ जानने को नई चीजें मिलेंगी. क्या चीज हम लोग फाइनली कर सकते हैं, वो सारी चीजें जानने को मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से. यही चीजें. अच्छा ठीक है, ठीक है. थैंक यू रितिका. हमने ऐसे ही कुछ प्लान किया तो थैंक यू. शुभम. यार आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो यार आप. अरे भाई म्यूट पे हो. Am I audible? Yes, you're audible Yes. now. Yeah. Basically, I'm a faculty colleague of Okay. Smriti Mishra, Okay. and I am also interested to gain knowledge about this session. Great. Found it very interesting when I came to know about that. So that's why I have joined, and I am here expecting for the same. Great, great. Yeah, glad to have you here because and very interesting because you're here. I mean, Hetal ma'am here, she was also a faculty at our engineering college, and then she started working with startups quite actively now. So maybe Yes, yes. yeah, Actually, I am a member of a startup team here in my college. Oh, okay. Startup committee. Okay. So that's why I also joined. Okay. Okay. Great. Yeah. Thanks for joining. Thank you. Mohammed Nabil, do you want to go next? Like I'm just taking out names. Yeah. Yes, sir. So I was looking forward to know about this particular event regarding entrepreneurship, Yeah. and it would be a great start as to know that what we can do to start up for a startup or to be an entrepreneur. Like it is a good opportunity for me to learn new things. Okay. Okay. Yeah. Interesting. Also, not like don't call me sir. I think thoda freer हो जाओगे if you don't do that, right? Okay, okay, sir. Yeah. Okay, sir. बढ़िया. Karthikeya. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर बेसिकली सर लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप किस लिए होता है. सर एंटरप्रेन्योरशिप होता है सर कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है सर उसको सॉल्व करना, कैसे कैसे हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं सोसाइटी के लिए. ओके. बेसिकली जी सर. नहीं आप और बोल रहे थे तो बोलो. जी सर. थैंक यू सर. अच्छा. Does somebody else want to go next? नाम लेना पड़ेगा. अरबाज, हैदर, सौरभ, अवनीश. बोल रहे हैं. ठीक है. चलो. Let us start. I mean, so I mean in like okay. अच्छा ठीक है. हाँ. So what we'll do is that we had planned similar things, right? To take you through some examples of of our interaction with entrepreneurs. How have we enabled some entrepreneurial ventures in and around us, as well as supported them, and maybe learn from their journeys and how they have moved forward, and hopefully those learnings would be helpful to you, right? So that is what we come with. And I mean, we'd be more than happy to answer any specific questions if you guys have, in terms of, what can you do in terms of the immediate steps, or how can you engage with the startup ecosystem in general. Yeah, ma'am, do you want to say something?
You mean me or Yes, Stuti? you. Yeah, you, because you had Me. unmuted yourself. So I'm very excited to see what comes out of this session and looking forward to interacting with all of you. Right. Yeah. Great. Cool. तो थोड़ा चिल से शुरू करते हैं. टीवी पे आजकल क्या देख रहे हो? कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है क्या टीवी पे आजकल? ये शार्क टैंक इंडिया सर. शार्क टैंक इंडिया. ओके. ऑन सोनी टीवी. सर Yes, यूपी ma'am. इलेक्शन आ रहे हैं वही देख रहे हैं. कौन सा है लेक्चर क्या? आ रहा है? हाँ पुनीत, क्या बोल रहे थे? और सर वो न्यूज एंड ऑल में इलेक्शन वाला चल रहा है तो अच्छा, वही. इलेक्शन आ रहा है. बिल्कुल सही बात. Election. क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? सर बीजेपी. बीजेपी जीतेगा. ठीक है, चलो. शार्क टैंक इंडिया. हाँ, अरबाज हैदर, थैंक यू. ठीक है. कोई देखता है यहाँ पे ऐसे रेगुलरली शार्क टैंक इंडिया, या कल रात का परसों रात का एपिसोड देखा है क्या किसी ने? जिसमें तो एक मैं तो अभी शुरू किया हूँ, तो मैं अभी पहला ही एपिसोड देखा था उसका. मतलब अच्छा, ऐसा उसमें शुरू करूँ. क्या प्रोडक्ट था उसमें, क्या देखा था? सर फर्स्ट एपिसोड में वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला देखा था मैंने, और जो मोमोज वाला लाया था उन्होंने, हाँ. दार्जिलिंग की जो कंपनी थी, ब्लू पॉइंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके, हम्म. बस वो दोनों देखा मैंने. अच्छा. तो मुझे कंटिन्यू करना है. अच्छा. ओके. ठीक है. और किसी ने कुछ देखा है? सर देखा है मोर देन 50%. मतलब अभी जितने एपिसोड आए हैं 50% एपिसोड देख चुका हूँ. अच्छा. ठीक है, चलो फिर Yes, हम sir. एक बार अभी प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं. एंड मे बी हम वापस सर्कल बैक करेंगे इस पे कि हम कैसे शार्क टैंक के डिस्कशन पे आ रहे थे. ठीक है, तो अभी लेक्चर के लिए रेडी है सब लोग? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. यस सर. अच्छा, Yes. जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए भी रेडी है भाई. मैंने तो स्मृति मैम से पूछा था सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है. मैं वो वाली स्लाइड दिखाऊंगा तो बच्चे शुरुआत में थोड़ा डर जाएंगे, बट ठीक है, सब काफी एंथुजियाज्म में आए हैं. तो शुरू करते हैं. हाँ, तो ये एक लड़का है निहाल सिंह आदर्श. ये परसों के एपिसोड में था शार्क टैंक इंडिया के. एंड इसका बेसिकली अगर तुम्हें सोल्यूशन समझ रहा हो तो ये जो पीपीई किट्स होते हैं उनमें उसने एक फैन लगाया था ताकि जो डॉक्टर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स काम करते हैं फॉर कोविड रिलीफ, उनको अंदर मतलब वेंटिलेशन मिल सके. मतलब उसने ऐसा रियलाइज किया कि ये एक प्रॉब्लम है एंड उसको सॉल्व करने के लिए उसने ये किया और वो उसने पिच किया था वहाँ पे. तो ये हम जहाँ पे मतलब काम करते हैं, हेतल मैम जहाँ पे अभी लीड कर रही है डिज़ाइन इनिशिएटिव्स, ये वहाँ का स्टूडेंट है. वहीं पे ही उसने पूरे रिसोर्सेज उसको मिले, वहाँ से उसका आइडिया जनरेट हुआ और अभी ये शार्क टैंक पे. तो what we were planning to do through this session is take you through what led to this, like what was behind the whole journey. So I think it was around this time back in 2020, right? I think March 2020 is when we had started working with Nihal, and अभी 2 साल बाद वो यहाँ पे. So that has been the journey, and with this journey we wanted to explain to you कि एक entrepreneur के journey में क्या क्या चीजें आती हैं, and what can you expect in your own journeys, and then take it, move yourself towards it in case if that interests you, right? अच्छा लगने के लिए हमने उसका एक और फोटो डाल दिया. उसने सिर्फ 101 रुपये मांगे 4% इक्विटी पे, बट बहुत अच्छे फाउंडर्स उसको मिल गए ऑन हिज टीम. सो बैकर्स मिल गए उसको अपनी टीम में, राइट? सो व्हाट वील डू इज दैट ये एक मतलब हमने एक प्रोसेस ब्रेक डाउन किया है. सो द आइडिया इज, जैसा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं that we want to learn how to maybe become an entrepreneur, run something of my own, start something of my own. And what we are here to tell you is that there is a process to it, right? There is a method to the madness, right? मतलब हर जगह कुछ ना कुछ ये इसके बारे में आजकल जहाँ जाओ सुनने को मिलता है. फाइनली अब इंडियन टीवीज में आ चुका है तो मम्मी लोग भी बात कर लेती हैं अबाउट दिस. But the idea is that all of this can be done through a process, and it's not rocket science. ठीक है? Rocket science बनाना भी वैसे easy है, मतलब ऐसा rocket बनाना. Rocket science is also not very tough, but
letting you know. So this is what the overview is like, and like through the next few slides we will be explaining to you how did we actually implement this whole process into practice, right? And yeah, ma'am, do you want to anything? Cool, yeah. So we started with ideation. We talk about user research, build a prototype of what the solution could look like, and then we move forward to the next stage, right? So let us start with the very first stage of this whole process, which is ideation, right? So Nihal ne kya kiya, and something which we did from the process is as part of a workshop at Riddle, right? तो एक डिजाइन चैलेंज वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था by Riddle only, inviting solutions, or inviting brainstorming sessions with students around problems related to the pandemic, right? जहाँ पे ये लड़का आया था निहाल सिंह, और उसने बोला कि यार मेरी मदर एक डॉक्टर है, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट शी इज फेसिंग राइट नाउ, और ये समझ लो ये अप्रैल 2020 की बात होगी, अप्रैल सेकेंड वीक में भी, एंड उस टाइम पे ऐसे फर्स्ट वेव बहुत क्रेजीली राइज हो रही थी, राइट? तो वो सिचुएशन समझो, एंड ही वाज लाइक कि यार माय मदर इज फेसिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड मतलब पूरा दिन उनको पीपी किट्स में रहना पड़ता है, एंड दे डू नॉट हैव इनफ वेंटिलेशन, they sweat a lot and it's very uncomfortable for them, right? तो उसने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे को अराइव किया. सो व्हाट एसेंशियली वाज हैपनिंग हियर इज दैट ही सॉ अराउंड हिम, ही लुक्ड फॉर अ प्रॉब्लम, एंड ही रियलाइज्ड कि हाँ ठीक है, दैट दिस इज समथिंग which really concerns me and I would like to do something about it, right? And it started with a very simple thing, which was looking after a problem which his mother was facing. ठीक है? Then so ये मतलब if you see in this particular photo, I don't know if you're able to, जो लास्ट पैनल है डिजाइन चैलेंजेस नाम का, उसमें ही निहाल वाज लाइक ही वाज ऑन द कॉल, एंड दैट इज वेयर ही पिच्ड द आइडिया. पोस्ट दैट उसको हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज दिए, उसको एक्सेस लैब्स दिया अपना प्रोटोटाइप बनाने के लिए. उसने और मतलब और रिसर्च किया कि वो और क्या क्या सोल्यूशंस डेवलप कर सकता है. ये उसके इनिशियल प्रोटोटाइप्स हैं. अगर तो इनिशियली वो पहले कुछ ऊपर ट्राई कर रहा था, ऊपर से बनाने के लिए, एंड धीरे धीरे उसको समझा कि अभी वो बैक साइड पे पीछे उसका एक फैन रहता है इन द फाइनल प्रोटोटाइप, राइट? बट वो अकेला जाके हमारे लैब्स में यही दिन भर करता रहता था. ठीक है? तो ये वही रिडल में जो मतलब बेसिकली रिडल एज अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर, उसका काम ये है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है एंड वो उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उसको वो मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, और उसको वो एक्सपर्ट से कनेक्ट करता है इन केस उनको कुछ स्पेसिफिक हेल्प चाहिए या उनको कुछ गाइडेंस चाहिए अबाउट हाउ दे कैन मूव अबाउट. ठीक है? So like this is an example of the kind of things which we do in the university, to engage students more often and to guide them as to how they can move forward in their journeys, right? तो जैसा बोला था कि फाइनली जब वो ऊपर के बाद फिर उसने नीचे ट्राई किया, एंड ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर टॉकिंग टू मल्टीपल मेंटर्स, talking to people in this space, medtech space में जो भी लोग थे, talking to doctors majorly, yeah, and right, तो ये सब labs हैं जो हमने उनको provide किए थे. ये लेज़र कटिंग मशीन है जहाँ पे वो प्रोटोटाइप्स बेसिक बना सकता है. ये 3D प्रिंटर है एक. नेक्स्ट बाकी बायो लैब्स हैं और AR/VR लैब है. द आइडिया इज दैट सोल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज आपके पास वो टूल्स अवेलेबल हैं, यू कैन ऑलवेज बिल्ड समथिंग अराउंड इट. So yeah, just to also give you an example कि वो जो इकोसिस्टम था जिसमें निहाल प्रॉस्पर कर पाया, निहाल कुछ चीज़ें डेवलप कर पाया, वो ये उसके एलिमेंट्स हैं. तो after he was able to develop a particular solution,
जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन लोग के काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं टू सपोर्ट यंग इनोवेटर्स, जहाँ पे ये इनोवेटर्स को ग्रांट्स देते हैं टू वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, ग्रांट फॉर रिसर्च भी देते हैं, एंड ग्रांट फॉर इवन जस्ट वर्किंग एज इन lieu ऑफ अ सैलरी, बिकॉज अर्ली टाइम्स में बच्चों को मतलब किसी भी स्टार्टअप इनोवेटर को सैलरी नहीं मिलती है, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो उनको वो सब्सिडेंस ग्रांट्स भी देते हैं अपने डीएसटी और डीबीटी और बायरन जैसे इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद निहाल ने जब अपना प्रोडक्ट बना लिया तो उसको महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी है वहाँ से कनेक्ट किया, जहाँ पे मैं पहले काम करता था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो पुणे में, तो निहाल पुणे सिटी में था, और वहाँ पे उसको जो भी डॉक्टर्स थे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उनसे कनेक्ट किया और हेल्प किया वहाँ से फीडबैक लेने में। पुणे में ही एक नेशनल केमिकल लैबोरेटरी है जहाँ के साइंटिस्ट पैरेलली ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे थे, कोविड टेक्नोलॉजीज पे। तो वही इनोवेशन सोसाइटी के थ्रू हमने उनको वहाँ से निहाल को उनसे कनेक्ट किया। वहाँ पे एनसीएल के लैब में निहाल गया, वहाँ पे उसने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया, और ऐसे ही उसका आगे प्रोजेक्ट बढ़ता गया। तो बेसिकली ये इकोसिस्टम ने क्या इंश्योर किया कि निहाल को एक मेंटरशिप मिलता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग हिज प्रोडक्ट, also in terms of the financial aid. So the network is out there as long as you have an idea and a will to work further, right? So remember that, and that is something which which you will find validated once you start building something of your own, right? So this will be a part of your learning journey, or I mean this should be the mindset in fact with which you start doing something, because as long as you have all the resources available, you just have to make sure that you are taking actions and steps in whatever direction that you want to, right? राइट, ये वो ग्रांट्स हैं, और मतलब ये रिडल के और इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए थे, बहुत सारे लोगों को अपने सोल्यूशन शोकेस करने के लिए। ये जो फर्स्ट फोटो है उसमें एक चेस बोर्ड है, आई डोंट नो इसमें काफ़ी लोगों ने देखा होगा या नहीं, बट वो चेस बोर्ड पे पीसेस मूव करते हैं, एज इन विदाउट यू टचिंग द चेस बोर्ड। सो थ्रू अ मोबाइल कंट्रोल एप्लीकेशन आई कैन मूव पीसेस ऑन माई चेस बोर्ड, राइट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, आई एम गेसिंग ये सुना होगा, तो यहाँ के जो विनर्स थे उनकी मेंटरशिप भी रिडल में हुई थी, और ये निधि के वो ग्रांट्स हैं जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। या मतलब ये ज्ञान है, अगर ये मतलब इसके बारे में बोल के कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, जस्ट द फैक्ट दैट यू शुड नो कि ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है तुम्हारे पास, एंड in case you are looking to tap into any of these, all of these resources are available, and quite easily on the internet also, right? Along with all of that, a community was very important, because कोई भी इनोवेटर को एक सोल्यूशन पे काम करने के लिए यू नीड पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक सोल्यूशन कुछ एक बिल्ड कर रहा है, तो उसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। अगर निहाल का एग्जांपल ले लो, तो उसको चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी चाहिए, जो जो उसका पूरा प्रोग्राम कोड करेंगे ऑन हिज माइक्रो कंट्रोलर्स। उसको हार्डवेयर पीपल चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग चाहिए, उसको सप्लायर्स चाहिए। So all of these people come together, and that is only when you are able to create something. So and that has been the case with Nihal, and that is what we've also sought to set up at Riddle, right, with our various communities. There's this annual showcase exhibition called Maker Mela, wherein वहाँ पे invite करते हैं innovators और makers को from across the globe to showcase their innovations. ये पिछले ही हफ्ते हुआ, वर्चुअली हुआ था, बट नॉर्मली ऑफलाइन होता है। would be a great experience if any of you ever get a chance to attend it and see the kind of solutions which people are building. ऐसे काफी the first time I saw it, like it was quite inspirational for me. So yeah, or even I mean I'm sure ऐसे multiple events होते होंगे even around you. So yeah, just keep an eye out and look for people whose work resonates with you as part of these communities, and who you'd like to move towards,
right? Just examples of a few more community-led initiatives, that we've run and which have fostered such solutions coming up. Right, ये निहाल का थोड़ा media coverage है, and yeah, that is, yeah, this is where we've come now. Right, so I don't know if you guys would be up for a small activity at this point of time. By a show of hands, okay, ठीक है, let's still give it a try, right? So what we had planned is that we'll break you out into breakout rooms, and so considering, I mean, the fact that you've listened to a few things which we have done, how the community has helped Nihal, how the resources which were provided to him, the kind of interventions that are out there, it would be very helpful for you guys, I would say, if if you could think about ways in which you can initiate entrepreneurial activities on your campus, right? And I mean, what we plan to do is that maybe we could break you out into breakout rooms. We'll give you 5 minutes to discuss, and then come back and share with the larger group what have been your findings as part of this, right? So this is a risk. I don't know how engaging you all will be in a breakout room, but let's give it a shot. Right, so so there will be 8 breakout rooms, and so yeah, we'll meet after 5 minutes, and what I'm looking for very simply, right, are 3 challenges which you feel you might be facing in terms of starting up, right, or setting up something of your own, right? Only 3 challenges of what you think that are stopping you from setting up, and 3 things which you can do to initiate entrepreneurial activities in your campus or around you, right? Does that make sense? Anybody has any questions? Does anybody have any answers? अंताक्षरी खेलनी है? ठीक है, चलो, कुछ नहीं करना है, ठीक है. So yeah, I'm opening the breakout rooms, and we'll close them in at 4:10. It's 4:03 now. We'll close them at 4:10, and then we'll see if you have something to speak or you just dropped off the call. That's very convenient also. Yeah, so I've opened the, हाँ, तो breakout rooms खुल गए हैं, तो एक बार देखो कि हाँ, अगर सबको प्रॉम्प्ट आया है क्या ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने का? Yeah. तो ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करो, एंड वील क्लोज ब्रेकआउट रूम्स 4:10 पे बंद करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स या क्या डिस्कशन रहा है. हाय, जो लोग अभी भी हैं मेन रूम में, उनको ब्रेकआउट रूम का प्रॉम्प्ट नहीं आया है क्या? विनय मिश्रा, मोहम्मद उमेर,
Ash, you want to go into the breakout rooms? Yeah, I was just thinking. Huh, yeah, I'm going. Hi, Manchu. Hi, Mohit. Hi, Manchu. Ashish. हेलो यार, मुझे ये रूम में बुलाया गया था तो मैं आया था। आप कुछ बोल नहीं रहे आप लोग। हाय अमन, निहारिका, सूर्या। हाँ निहारिका, आपने ये रूम में बुलाया था मुझे। निहारिका। हेलो मोहम्मद। हेलो कृष्णा। यार आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आवाज रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है? अच्छा, तो आप लोग तो बात करो। आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ भाई कृष्ण कुमार जी? अरे कृष्ण कुमार जी चले गए भाई, बड़े शर्मिला। चलो ब्रेकआउट रूम्स क्लोज करते हैं सारे, देखते हैं कि क्या हुआ है। काफी अच्छे डिस्कशन चल रहे थे रूम में। Is it? आ, एक कोई तो कृष्ण कुमार सरोज जी, हाँ, रोल नंबर क्या बोल रहे 49। थे? रोल नंबर 49 कृष्ण कुमार सरोज चले गए। बट क्या चल रहा था उनके साथ? नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं।
मैं उनसे पूछ रहा था कि कुछ है क्या उनके पास शेयर करने को, बट ठीक है। आई थिंक सब आ गए होंगे अभी, अब नहीं है, थोड़ा 10 सेकेंड और। अच्छा हाँ, एवरीबडी इज बैक। ठीक है। तो क्या क्या डिस्कशंस हुए, लोगों ने क्या 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 चीज़ें सोची, क्या क्या चीज़ें बात की? So like there was a question like what the challenges do we face while starting an entrepreneurship. Sir, so I think the main problem that I would be facing is how to generate an idea in my mind. Like the first concept is to have an idea about something so that we can innovate and generate a solution for a particular problem, or we can work on that idea to take it further to its cause. So I may have a problem in understanding what the idea can be. ओके ओके। और कोई? Sir, like Nabil has said that the main problem is idea, and the next problem is how to start it, and how to start working on idea. Sir, I think so that. Okay. और कोई है? Nabil और अरबाज. Okay. अच्छा, नबील और अरबाज आप लोग सेम रूम में थे क्या? No sir. No sir. नहीं, अच्छा नबील आपके साथ कौन था रूम में? सर पहले कृष्ण कुमार सरोज थे, बट वो लीव कर दिए। लीव कर दिए। उसके बाद आशुतोष थे, आशुतोष ओझा। आशुतोष है यहाँ पे? आशुतोष ओझा जी। Yes, तो आपने क्या डिस्कस किया नबील के साथ, क्या चैलेंजेस no, हो I सकते? was I was discussing with Nabil that he stated that we may have problems regarding generating new ideas. So I stated that after we decide on an idea or we pick a topic on which we have to start the entrepreneurship, the second problem I might be facing is regarding investment and all, that how to gather money or how to invest money so as to make this entrepreneurship successful. Yeah. Yeah. Okay. एंड अरबाज आपके साथ कौन था रूम में? भाई इनके साथ के रूम वाले थोड़े फंस गए। अरबाज आपके साथ था कौन, रूम में कौन था? सर स्मृति मैम थी। अच्छा, और कोई I था? was there. कोई स्टूडेंट था? सर लीव Two कर दिया others था। two others were there, but वो they were not communicating. अच्छा, All right. But Arbaz is having some certain things that उसके पास कुछ points हैं बोलने के लिए. ओके ओके, नहीं ठीक है। सो इट्स, हाँ मैम, वर यू सेइंग समथिंग? आई थॉट अगेन दैट यू वर सेइंग समथिंग। No, it's very interesting questions that they have raised, and you could let me know how you want to go about it. Yeah. Do you want to talk about the next example with the? Yeah. So thanks everyone, and thanks Ayush for taking us through the entire entrepreneurship process. And I think what Nabil ने बताया और जो यहाँ अरबाज ने भी बताया है कि आइडिया कहाँ से आएगा, where do I find that problem statement which is very promising and exciting enough for me to solve, right? And उसके बाद I think Ashutosh said something about कि पैसा कहाँ से आएगा, अगर मुझे आइडिया आ भी गया तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा. So I think that हिंदी, okay, I think that आयुष ने अपने प्रेजेंटेशन में ये पूरा शेयर किया था कि पूरा
पूरा इकोसिस्टम बहुत सारी प्लेसेस इन इंडिया में एग्जिस्ट करता है. सो वेयर आई कम फ्रॉम, रिडल, व्हिच इज रिसर्च इनोवेशन इंक्यूबेशन डिजाइन लैब्स, इट्स बेस्ड आउट ऑफ सोमया विद्या विहार यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पे जैसे आयुष ने बताया था कि एक बार आइडिया आ गई तो लैब्स है, ग्रांट्स है. एंड आशुतोष, आपने जो बोला था कि पैसा कहाँ से मिलेगा, ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ गुड आइडिया एंड इफ यू मेक अ बेसिक प्रोटोटाइप, देयर आर मोर देन इनफ गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट नोडल initiatives through which you can get money. I think आयुष ने एक स्लाइड भी दिखाई थी जहाँ पे उन्होंने बात किया था about निधि प्रयास, जहाँ पे आपके जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, निहाल is a 19-year-old boy, निहाल सिंह आदर्श का एग्जांपल दिया था आयुष ने. When he came up with the prototype, we could give him 10 lakhs through Nidhi Prayas because his idea was so promising and it was so relevant in the COVID times that he got 10 lakhs for him to keep experimenting with whatever prototype he had built. So when it comes to funding, ट्रस्ट मी आशुतोष, इतनी दिक्कत नहीं है. दिक्कत आई थिंक जो नबील और अरबाज आपके दोस्तों ने बताई इन टर्म्स ऑफ कहाँ से आइडिया आएगा, हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो शायद किसी ने सॉल्व नहीं की है, और अगर की है तो इतने अच्छे से सॉल्व नहीं की है. सो दैट्स वेयर द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग कम्स इन. ओके, सो जस्ट टू पुट इट सिंपली, आयुष, वुड यू माइंड जस्ट शेयरिंग दैट स्लाइड? Yeah, or does I could, acha, theek hai. Yeah. Can you see my screen now? I can see your screen, but I can't see anything. Okay, so addressing what Nabil and Arbaz were asking about, right? Like ये ideas कहाँ से आएंगे? And idea का हमेशा, ये ideation process का हमेशा outcome हम जो expect करते हैं या objective जो हम expect करते हैं वो होता है innovation. और innovation करने के लिए 3 बहुत ही basic से steps है. As Ayush will show you now, that is inspiration, आइडिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये 3 ही स्टेप्स है जो आपने करने हैं, जो विस्तार में आयुष ने पहले बताए थे, जिसमें आइडिएशन था, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, लॉन्च एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस primarily consists of only these 3 steps. And I think as students of engineering who are still studying on campus, you all should only be bothered right now about how do you make your minds sharp enough and how do you make your presence very observant, like how do you become people who are very good at observation, like आजू बाजू में क्या चल रहा है, कहाँ problems है जो आप pick up करके solve कर सकते हो. So inspiration is that first step, and I just don't want to give gyan on inspiration. Let me give you one example. So इसके लिए ना I'm just going to show you one picture. Okay, so this is a picture. I want everyone to look at it very very clearly, and if someone can tell me now कि ये क्या है. MRI. Yeah, Nabil, it's an MRI machine. Okay, everyone agrees it's an MRI machine? Can I have a few more people just unmute themselves and tell me yes or no? Have you seen this machine in your life? I hope आपको use ना कर. Like I'm hoping किसी को use नहीं करनी पड़ी हो, but आपने जरूर देखा होगा इसको. Okay, so this is an MRI machine, as Nabil said very rightly. This is an MRI machine. Now tell me, is it a very fun thing? It's a medical test. Is it a very fun test? Yeah, can anyone tell me that is it something, a fun procedure to go through? No, man, it's not. Why is it not? Can you tell me? Ma'am, because during like MRI scan, a person has to lay down very still, and there should be no steel materials or metal objects inside with that person, because it is a magnet. And next, while going inside, the person may feel some nausea because of the continuous wiring of the machine. Yeah, very rightly said. I am 40 years old, and for me only, this machine looks like a giant stapler that if you put me in, it's going to like clamp me and I'm going to die. So this is very very scary. And Nabil, you have gone ahead and told me why it is scary, right? Like because it's there's a continuous buzzing sound, is magnetic, you got to be very very still. You can just imagine if adults like all of us do not find it fun, can you imagine छोटे छोटे बच्चों को अगर ये करना पड़ता होगा तो कितनी दिक्कत होगी, राइट? सो ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, ये एक पर्टिकुलर मशीन है जो यूएस में एक डिजाइनर है, 20 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है इन द मेडिकल फील्ड, एंड ही हैड डिजाइन दिस एमआरआई मशीन फॉर चिल्ड्रन.
ठीक है, एंड उन्होंने ये मशीन इंस्टॉल कर दी एक हॉस्पिटल में, and then he could have left it there. He should not have bothered to check whether everything is fine, because the machine in itself from the technical perspective works perfectly fine. But then, being a designer, it's very, very important that you go back to your user and check for feedback कि ये चल रहा है ठीक से, सही तरीके से चल रहा है, इसके जो भी यूजर्स है उनको आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है. So this particular designer went to this place to check out कि ये machine ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है. He found one scene, and I like to narrate that scene to you all. He saw that there was this 7-year-old girl profusely crying, and his dad had to kneel down and tell her ki, you know what, darling, we had promised that you will go through this test. It's just going to be a matter of half an hour, 40 minutes. We got to do this. We don't have an option, and things like that. Now tell me, you guys are all you are aspiring entrepreneurs. आप लोगों को entrepreneurship में interest है. अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और अगर आप देख रहे हो कि उसके एंड यूजर्स की हालत ऐसी है where they all are in such a limbo where they are not happy to use this, is this a good design then? Yeah, can someone tell me if you were that designer, and if you can go and see that the girl was profusely crying and the dad was, poor guy, had to convince the little girl to go into the scary machine. Is this a good design? Any thoughts? Ma'am, the design may not be good, but if I have designed that particular machine, I know its usage and what type of result it is providing to the user. And Correct. if through that result, the health of that particular person can get improved. So yeah. I think that it's also fine with that user to go through so much pain. If that gives a result that is promising and helps the user in any way. Very good, Nabil. So I think you have spoken from the functionality perspective, that functionally this machine is fine. I know इसमें दिक्कत होती होगी, but फिर भी आपको use करना चाहिए because you need to know what is wrong with that child. So as an entrepreneur, you need to have that design sense कि functionality बहुत जरूरी होनी चाहिए, जिसके बारे में आपने बात की है. But at the same time, desirability is also a factor which as an entrepreneur you should focus on. Like say, while this machine looks to be functionally fine, is it something that your end user is going to be excited about? Of course, it's a medical test. No one's going to be really excited about it, but can we? And that's where a true entrepreneur or a designer comes in, right? Given a scenario, as Nabil, you rightly pointed out, कि ये जरूरी है, अभी इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं, ये करना पड़ेगा. But इसको भी मैं कैसे improve कर सकूं? So suppose if I give all of you all a chance, and some of you all are talking, I really, really appreciate it. Arbaz, Nabil, Ashutosh, I would request rest of you all also to participate in a question that I'm going to ask you all. अगर आप ये मेडिकल इक्विपमेंट के डिजाइनर होते थे, ठीक है, आप इसको कैसे रीडिजाइन करते थे? लाइक से फॉर मी राइट नाउ, वो फ्लोर पे मैं येलो लाइंस देखती हूँ, वहीं से मुझे डर लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज फॉर मी इन माय मेंटल मॉडल येलो लाइंस मतलब एक्सीडेंट सीन है. सो ये सब काफी स्कैरी है मेरे लिए. तो सपोज आप लोगों को किसी बच्चों के लिए रीडिजाइन करना होता था, तो आप क्या करते थे? And this is just a small exercise for you all to start exercising your curiosity muscle. आप लोगों ने ये बात की थी ना कि आइडियाज कहाँ से आएंगे. सो आइडियाज आने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी जो होती है कि आप डिस्कशन में एंगेज करो, आप बातें करो, छोटे छोटे ऐसे एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करो. दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे व्हिच विल हेल्प यू बिकम बेटर एट आइडिएशन. सो कैन एनीवन टेल मी हाउ डू आई मेक दिस, how do I make this more what do you say, palatable for children? Yeah, yes. From the top. Himanshu, I couldn't hear you. Can you repeat that, please? Ma'am, we should have not covered it from the top. We can remove its top. Okay, वो शायद टेक्निकल कंस्ट्रेन हो सकता है कि कैन यू रिमूव द पीसेस और नॉट. तो सपोज इफ आई टेल यू ऑल कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है उसमें ज्यादा मैं ऑल्टरेशन नहीं कर सकती हूँ, बट फिर भी ये बच्चों के लिए मैं अट्रैक्टिव कैसे बनाऊं? Himanshu, you're thinking in the right direction. Think more. How do I make this more fun for children? We can create some animations or insert any pictures on it. Very good. Excellent. Yeah. What sorts? Can anyone else or Himanshu himself, can anyone contribute to this? You're in the right direction, Himanshu. What can I do more? And cartoon picture or something animated type. Absolutely, Himanshu. We could make it more cartoony and more picturesque, more colorful. और क्या कर सकते हैं?
और कुछ कर सकते हैं? Ma'am, we can use Games multiple bright colors on the machine. Yeah. Yes, Ayush So that it Pandey. can be looked attractive. Yes, make it look more attractive. And why is it so white and beige and boring, right? Make it more look more attractive. I think someone else was also speaking. Can you come again? Yeah, so you know what, I will request Ayush Shukla to show you all some pictures of how colorful this was. So yes, but there's something else also, but I would want you all to see this first. Yeah, couple of pictures in the coming slides. Like say here, if you're seeing kafi alag alag themes hai. Mr. Shubham has said musical rhyme play. Yes, music ho sakta hai. Or can I see some more slide, one or two more? Yeah. So I think किसी ने तो ये बोला था गेम के बारे में कुछ बोला था. I couldn't hear who the person was, but I think Nabil. Yeah, Karthik. Yeah. So I think Nabil, in the beginning, what you said, right? Like, why is this scary? One reason it is scary is because you have to sit very, very still. So ये designer ने ये जो कुछ भी किया है, कलरफुल ये सब जो बना दिया है, which even you all felt कि ऐसा करना चाहिए, that is absolutely right, ऐसा सब करना चाहिए. But जो नबील वाला पॉइंट था, अगर सपोज मेरी खुद की 4.5 साल की बेटी है, मैं उसको ऐसा कुछ कलरफुल दिखा दूं, वो जाके क्या वहां शांति से सोने नहीं वाली है. She will keep on moving, right? उसको तो exciting लगेगा ये पूरी चीज. And that's where a good designer and his observation skills come into the picture. So this particular designer actually went in the real world to observe children. See, we all have been children, and hence intuitively आप सब लोगों ने मुझे ये answers दिए कि उसको colorful बना दो, stickers लगा दो, tattoo, ये वो सारी चीजें आपने जो सोची थी वो सही थी. But this designer actually spent a lot of time in children's museum. He went to their schools, play areas to observe कि बच्चों को अच्छा क्या लगता है. And I think what Karthik shared with us कि उनको गेमिफिकेशन अच्छा लगता है, गेम्स अच्छे लगते हैं. सो इसको हम गेमिफाई कैसे करें, राइट? सो उनकी जो रिसर्च थी, ये डिजाइनर की रिसर्च थी, उनसे उनको 2 पॉइंट समझ में आए कि चिल्ड्रन आर वेरी वेरी attached to storytelling, and they are very compassionate towards nature and animals. So the only thing I would like to ask you all कि आपको क्या लगता है, अगर किसी बच्चे को ऐसी मशीन में स्टिल रखना होगा तो जनरली मेडिकल प्रोफेशन में क्या किया जाता है? एनेस्थीसिया दे दीजिए. करेक्ट. या फिर तो या करेक्ट, जिसने भी ये बताया है, आप उनको ड्रग कर दो सो दैट दे आर स्टिल. बट या, एंड व्हाट इज द अदर वे? We should engage them by giving them some toys or anything. Yeah, Himanshu, very, very well put. Yes, that is what should be done. But what is generally done in the medical professions, if they are either strapped or they are given drugs. Now, both these solutions are not very good for little children like 7 years old. If you drug them, it's not very good for their body from physical perspective. And if you strap them, emotionally, they are traumatized, right? Like, उनको जो भी हुआ था, जिसकी वजह से आप MRI machine use करते हो, शायद वो तो ठीक हो जाएगा, but they will develop newer traumas कि हमारे साथ क्या किया था हमारे parents और doctors ने. So, हिमांशु, आपने जो बताया था कि उनको किसी तरीके से तो engage करना चाहिए. So, this is what this designer did, that he found out that it's not such a rocket science problem. Children are actually very simple, and I'll tell you what he did. Of course, he made the environment very colorful and all of that, but at the same time, he would tell children very simple things like that. What, हम एक कैंप साइट पे है, और अगर आप बिल्कुल ही स्टेडी रहोगे और ज्यादा आवाज नहीं करोगे तो you will see a shooting star. Okay, and the other example I would give you, like this is a submarine, and you are in a boat and you have to stay very very steady, because अगर आप move करोगे तो fishes सब उड़ जाएंगे. And by giving such simple stories like this, they were able to bring down the sedation rate, like जहाँ पे anesthesia देना पड़ता था, to 10%. Only 10% of children required sedation, and that designer, after implementing such simple solution, was able to go to the site and see that little children were frolicking around in this area, telling their parents कि हम यहाँ वापस आना चाहेंगे, उनको इतना मजा आया. So नबील, जो आपने शुरू किया था, आपकी बात बहुत सही थी कि फंक्शनली ये चीज सही है, अभी इसमें और क्या कर सकते हैं. बट एज अ डिजाइनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, you need to keep pushing to make
life easier for the people around you. And when it comes to medical profession, तो और भी ज़्यादा, because medical profession के जो end users होते हैं वो anyways काफी तकलीफ में होते हैं. So how do you keep innovating in the field of, say, medicine field or anywhere else around you, so that you can come up with such innovative solutions, and because of which he became one of the top sellers of MRI machines in the country, not only because his MRI machine functionally works fine, because every MRI machine does that, but he was able to offer to his end users something which other people were not able to use. So the point I'm trying to make here is that as a designer or as an entrepreneur, okay, entrepreneur की journey I think शुरू होती है as a designer. As a designer, you need to be very observant of the world around you. देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक छोटा सा इनोवेशन लाके हाउ कैन वी मेक इट बेटर. So I had a couple of more examples. I'll take them only if you guys are interested. नहीं तो this was just a starting point to tell you all, just a small example to show you all the power of empathy. Like if you pay attention to detail, you can come up with really innovative stuff. So thanks Ayush for sharing that with us. So these were the steps I had mentioned. That inspiration was that kids participate anything once they perceive it as an adventure. Then ideation phase mein they came up with this kind of a solution, and jab implement kiya isko, then they saw that 90% of kids now did not require sedation. They were able to do MRI without taking any drugs, and they were able to love the experience as well, right? So anyone who feels how do I start, you start simply by observing the world around you and questioning everything, that अगर ये चीज ऐसी है तो इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं. And by participating in a lot of workshops, lot of ideation sessions, which probably Ayush can conduct for you all, and that is how you go ahead in this journey. Thank you so much. Yeah, thank you, ma'am. Right, and thank you for the wonderful example and the case study. I think काफी helpful होगी. I was just thinking, I don't know, हमने अभी 1 hour mark तो cross कर दिया है, but I would like to say something. Yeah. Thank you so much, ma'am. I don't know about the students, but अभी हम लोग faculty room में भी, we all are sitting here. Students are not here in the college, but we all are listening to you very, very carefully. और ये जो example आपने दिया था, this is MRI machine का, this is like something which we've been visualizing for a very long time. मतलब ये तो हम लोग देख ही रहे हैं. This is something which is in our practical life, everyday life. We visualize this machine, but कभी ये इस angle से नहीं सोचा था. And this is a very, very, very nice example put. And all the faculty members right now, we were just discussing कि बहुत अच्छे से link किया है कि actually startup ideas आ कहाँ से सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा example था. And I'm really, really like enlightened by this example. And मुझे भी खुद को भी ये लगता है कि अगर मैं कुछ startup कभी करना चाहूँ तो मेरे पास idea किधर से आएगा. And like I really am not that kind of huge imagination I don't have, but अभी बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप आस ही पास सब कुछ है, available है, we just don't look for it. Yeah, so actually yes, Pradip ma'am, thank you so much. But it is, if we can engage our students also in many such ideation sessions, they will also really enjoy the process of how to become more creative. I think everyone is creative, they should just get more chances to exercise it. Yeah, Certainly I will try. Next session कुछ भी अगर हमारे कोई future workshops अगर आप लोग कभी भी आप लोगों के पास people are able to spare some time, possibly then we can conduct it. अभी तो response as such a session मुझे लगा नहीं कि बहुत अच्छा है, but the session for me personally and for the faculty members, it has been very, very innovative sort of, and moreover very enlightening, because हम लोग खुद भी ये सोचते रहते हैं कि like every day we keep on discussing the stuff कि कैसे हम कुछ अच्छा अपना कुछ पर्सनल कर सकते हैं क्या, कभी खुद का बिजनेस भी हो सकता है या खुद का कुछ ऐसा स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी ऐसा प्लान जो हम करने का सोचें. पेटेंट्स के बारे में आजकल काफी बात होती है सिंस द इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल हैज बीन सेट अप. तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट ये आइडियाज का जो ये लैकिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा है सबके बीच में. And this is because of the fact we are not able to relate ourselves with whatever we have around us. अगर हम वही देखें कि हमारे आसपास क्या है and what can be made out of all that, so definitely more and more ideas are going to come.
Yeah, yeah. And Smriti, I'll just like to tell you one thing, that you felt that the response is not good, but I won't agree with that. I think you should always have sessions with interested students. So I'm hoping whatever 36 number that we are seeing here are the people who are interested. It's fine if large numbers are not there. And I'm sure Ayush and I would be more than happy to come and conduct such sessions for your students, where we can have more focused sessions where exercises are done, where everyone can participate. Of course, today was the first session, so we let everyone keep their videos and all off. If you really invite us again, we will not come if the videos and audios are off like this. Yes. Okay, next time I'll ensure that, and I'll ensure this ki only those students are accepted for the webinar who are genuinely interested and who are genuinely Yeah. willing to participate. Yeah, and today also some of them ensure have that. really participated, Yeah. and we were participated even if their videos were off. So we're very grateful to them. Yeah. Indeed. If I can just add one thing, Ayush, like if I can share, like you all are young engineers, and here you have one of your speakers who's also a recent graduate. And I think if you all want to do something different, just take more chances. And I don't know if you all heard Ayush's bio very clearly, but he has taken those chances of working in a startup incubator, working for government, now working in the space where he can interact with startups from the investment perspectives. So I feel studying such profiles, following such people on LinkedIn, and getting them on board as your mentors will really, really help you all if you want to do something different from just taking up a regular campus job. Yes, I completely agree with this point. Yeah. Rather than depending on an institute for a job, you may create a job for, how many people, like. Yeah. Ash, anything else do we have to share? Nothing to share, but I just wanted to discuss with the students. So I understand कि faculty को बहुत अच्छा लगा, but is there anything that the students want to share? Considering हमने जो शुरुआत में expectations पूछे थे, do you feel that there has been at least some kind? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? So, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे आइडियाज हम लोग को जनरेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है जब कोई हम लोग स्टार्ट करें, तो मेरा ख्याल से ये एक व्यू पॉइंट था, जैसे आइडियाज जनरेट करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट या अपने नेबरहुड में हम लोग चीज़ें देख सकते हैं, या जो जिसमें लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या उसको सब लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे कोई चीज़ इन्वेंट करें या कोई चीज़ ऐसी मैन्युफैक्चर करें कि उसकी कॉस्ट नीचे आ जाए, या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग के बारे में सोचे जिससे और लोग बेनिफिट हो सके और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इस तरीके से भी हम लोग आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। यस आशुतोष। हाँ, नबील आप कुछ बोल रहे थे? हाँ यस, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह जो बनाते हैं, तो इसका सोल पर्पस हम लोग एक जगह फोकस करके कर सकते हैं कि खाली एंटरप्रेन्योर्स को ही चेकआउट करें, या फिर जो कंपनीज ऑलरेडी अपना मतलब बायो बनाई हुई हैं उस पर उनके सीईओज बनाए हुए हैं, या फिर कोई ऐसे जो जॉब्स लिए हुए हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो सब भी फॉलो करना चाहिए अलॉन्ग विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट। तो जैसे दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं, बट उससे अगर हम लोग कुछ एक कॉमन चीज निकाल सकते हैं तो वो भी बेटर हो सकता है, मतलब वो ट्राई किया जा सकता है। हाँ नबील, बिल्कुल। मतलब कोई मतलब वो तो बस एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया, अब आपको उसको कैसे यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंपनीज और सीईओज को फॉलो करना है या आपको स्टार्टअप्स की तरफ जाना है, आप मतलब और किसी एक पे एक्सक्लूसिव क्यों रहना है। मतलब आप दोनों फील्ड्स के बारे में जान सकते हैं यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म। तो हाँ यस सर, दैट ओनली बिकॉज आइडियाज अगर पिकअप करने हैं तो जैसे हम लोग जैसे कहीं से भी कर सकते हैं ना, जरूरी यही नहीं है कि एक एवरीडे प्रॉब्लम ही हम लोग लेके चलें, क्योंकि मतलब जैसे आशुतोष ने कहा कि कोई प्रॉब्लम जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका सोल्यूशन प्रेजेंट है, उसको और मिनिमल करना या फिर उसको और ऑप्टिमाइज करना, तो वो चीज ऐसे भी निकाली जा सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी कोई चीज बना रही होती है तो हम लोग उसको टेक करके अपना उसमें कुछ नया पार्ट जोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा बेटर या उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है इन सब फील्ड्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। डेफिनेटली बिल्कुल। मतलब ऐसे सब इंटरवेंशंस बिल्कुल ही पॉसिबल है। Yeah, and also one more point, Nabil. If you want to, like say, I think आपके पहले शायद आशुतोष ने बोला था about manufacturing costs coming down and all of that.
I think any of this, even in terms of for you to find out more inspiration through people on LinkedIn, or for Ashutosh to play around with cost, the best way to do that is pick up a project and start working on it. Like say Nihal ka jo example Ayush ne diya tha, he was a 19-year-old boy, but ये journey में उसने क्या क्या सीखा है. Like if you saw Ayush ने सबसे पहला वाला फोटो दिखाया था कि उसने कुछ एकदम बल्की सा प्रोडक्ट बनाया था, right? To that, now he has made something sleek which you can wear it around your waist. अभी ये इतनी जर्नी में, it was not just the technical knowledge that helped him. He had to deal with a lot of, he had to find out a lot of manufacturers within the city, find out कहाँ से cheaper बन सकता है, find out इसमें ये भी सारी चीजें हैं ना कि you will have to partner with organizations which will give you medical certifications. So ये बहुत सारी practical चीजें हैं जो on the go ही आपको सीखने में मिलेगी. ये कोई entrepreneurship का course या कोई workshop like today cannot help you. You have to pick up a project and start working on it and figure out for yourself in your locality, in your ecosystem, what works for you and what doesn't. Yeah. And for which I'm sure your faculty like Smriti ma'am, or if I'm not wrong, Mr. Shubham also belongs to the faculty. I think these people will start, they've started the process of how to build this kind of an ecosystem, and they will continue investing in resources which can build this, make this better ahead. Yeah. Definitely, ma'am. Definitely, we will make such type of environment so that our students get acquainted with latest technologies and latest tricks whatsoever be the possible to gain such concept of idea. Ma'am, basically example of MRI machine, very good, ma'am. And even though we have seen it multiple times, but we have not once at a time imagine the idea that we today got the opportunity to discuss with you. So ma'am, perspective was lacking, our perspective was lacking, and now we can boost our imagination to turn it positively into the brighter perspective. That's all because of you. Thank you, ma'am. Thank you very much. We all are very delighted to have you, and it's a wonderful session, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, sir. But yeah, we would like to hear more from the students of what they would like to do. Yeah. नहीं तो मैं एक हाँ एक चीज बस मुझे बोलनी थी बिफोर वी कंक्लूड इज दैट so we were planning कि हम ऐसे और सेशंस लेंगे, you know, maybe more sessions, but वो तभी पॉसिबल होगा अगर हमें पता होगा कि स्टूडेंट्स को क्या क्या वैल्यू लग रही है और वो क्या चीज़ सीखना चाहेंगे, राइट? मतलब वाइल फैकल्टी मेंबर्स का इंटरेस्ट है इसमें एंड वीड लाइक टू वर्क विद देम, बट जो एंथुजियाज्म और एनर्जी स्टूडेंट्स ला सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में वो अनपैरेलल्ड रहती है. तो इन केस आई मीन मे बी अगर आपको ये प्लेटफॉर्म सही नहीं लग रहा है, मे बी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इस कॉल पे उनको रीच आउट कीजिएगा आफ्टर द कॉल, एंड like we will appreciate some form of feedback or you know some form of I don't know, maybe demand maybe from your end to better understand ki what is it that aap log value karte hain and what is it that you would like to address, maybe you know if we were to conduct future sessions. Yeah, Definitely, Ayush. Basically, the thing is that it is the very first session that they are going through. Yes. And you can understand at the student level, it's first of all they hesitate to reply. And they have got the idea, the interaction whatsoever be the possible today on the very first occasion. Yes. I think it will motivate them. It will act as a booster dose for them. Yes. For another driving such a session. Yes. So we will definitely coordinate with the students and get back to you. And being a mentor of these students, I must say that it's very nice effort that you have placed, and they will definitely be interested on the part of the students. We can say they will definitely be interested for such more sessions in nearby future. Thank you, Ayush. Thank you very much. Yes. Thank you, sir. And yeah, I mean, ma'am, do you have anything else to add? If not, I'd like to
No, I think Ayush was trying that we would like to hear from the students, but nevertheless, as Shubham sir said, maybe first session when you all are a little hesitant. So we'll take that. But I hope this was useful. That's the only thing, ma'am. That's the only thing I know. We know our students. So that's the only thing. They are just not been in the process to reply. Nevertheless, in another upcoming session, they will rightly respond. That is our guarantee. No problem. This is also right only. I think it's fine to begin like that. There's no criticism here. Of course, वो धीरे-धीरे participation बढ़ता है. That's not a problem. But just to give you a preview of the kind of sessions Ayush and I do, would be something जहाँ पे हम बहुत कम बात करेंगे और आप लोग ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे. हम ऐसे एक्सरसाइजेस, हम आपको ऐसी एक्टिविटीज देंगे जहाँ पे आप लोगों को काफी डिस्कस करके हमारे पास वापस आना होगा, एंड वी विल फैसिलिटेट द होल थिंग. So just keep that in mind, and if you're enthusiastic about participation more, then Shubham sir and Smriti ma'am, you all can think about future sessions with us. Cool. Yes, ma'am. Yeah. All right. If there are no questions, Ayush and I will wait here till the end. People can, I think, start leaving the call, Ayush. Yes, they can. Okay. So if anyone has any questions for us specifically, can wait back. I think the rest of the audience can leave. We'll be around in case anybody has any questions. We'll just switch off our videos, but yeah, in case anybody has any questions, chat में लिख देना या फिर unmute करके पूछ लेना.